Assalamu alaikum dear students. I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I'm going to discuss our new chapter, that is nutrition. So let's move to the whiteboard. So nutrition, that is our new chapter. Chapter number 12. सो डियर स्टूडेंट्स, न्यूट्रिशन स्टार्ट करने से पहले हम बेसिक कुछ टर्म्स हैं उसको लर्न करेंगे. उसमें से फर्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है जो कि हमारे बुक के अंदर शामिल है, दैट इज़ न्यूट्रिएंट. सो ये शॉर्ट क्वेश्चन के अतबार से भी इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज़ न्यूट्रिएंट एंड व्हाट इज़ न्यूट्रिशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ न्यूट्रिएंट? So dear students, nutrient, it is the food or any substance that provides the body with elements necessary for मेटाबॉलिज्म. और डियर स्टूडेंट्स, मेटाबॉलिज्म हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर. दैट मेटाबॉलिज्म, ऑल सेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस दैट आर अकरिंग इन एन ऑर्गेनिज्म, दे आर कलेक्टिवली टर्म्ड एज मेटाबॉलिज्म. और इसमें कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों ही शामिल हैं. कुछ चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर बन रही हैं, कुछ चीज़ें जो है हमारी बॉडी के अंदर टूट रही होती हैं. यानी कि कैटाबॉलिक प्रोसेसेस एंड एनाबॉलिक प्रोसेसेस, ये दोनों ही कलेक्टिवली मेटाबॉलिज्म कहा जाता है. और मेटाबॉलिज्म करवाने के लिए जो एलिमेंट्स चाहिए, उन एलिमेंट्स को जो बॉडी को प्रोवाइड किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ फूड और एनी अदर सब्सटेंस, दैट इज टर्म्ड एज न्यूट्रिएंट. सो डियर स्टूडेंट्स, दो तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं. हम इसको टाइप्स में भी कह सकते हैं. वी कैन कैटेगराइज देम इन टाइप्स ऑफ nutrients. So some nutrients provide energy and some are necessary for metabolism, that provide energy, and some are required for मेटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़. तो इसको दो कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, बेसिकली वो तीन टाइप्स के हैं. नंबर 1 आर द कार्बोहाइड्रेट्स, जैसा कि आपने चैप्टर नंबर 2 में डिटेल से पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट्स. नंबर 2 आर द प्रोटीन्स, and number 3 are the lipids. और dear students, आपने ये भी याद रखना है that carbohydrates, they are the basic and the primary source of energy for all the living organisms approximately. So these are the nutrients which provide the body with energy, which provides or supply the body with the elements which are necessary for metabolism. And what kind of metabolism? They provide the energy. और आपने पढ़ा था previous chapter के अंदर, chapter number 11 के अंदर, कि कार्बोहाइड्रेट्स की जब ऑक्सीडेशन होती है तो तब उससे प्रोड्यूस होती है एनर्जी दो फॉर्म्स के अंदर. इसमें मैं एग्जांपल के तौर पर सिर्फ एक कोट करूंगा, उसके बाद हम मूव करेंगे दूसरी टाइप के ऊपर. लाइक ग्लूकोज C6H12O6, व्हेन इट इज ऑक्सीडाइज्ड, मींस जब ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट करती है, इट इज बर्न्ड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट एंड ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. तो दो तरह की एनर्जी यहाँ पर बन रही है. दैट इज द एनर्जी
which we get from the burning of glucose. So one type of energy is heat and the other type is adenosine triphosphate. इसके हवाले से डिटेल्स हम प्रीवियस चैप्टर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं. So these are the nutrients which provide us with the energy. And some nutrients, they are just required for the various metabolic activities or for metabolism. They include, the most important among them is water, vitamins. Vitamins में दो categories, water soluble and fat soluble. So water soluble, there are two. It includes vitamin B and vitamin C. While the fat soluble vitamins, they include vitamin A, vitamin D, vitamin E, and vitamin K. So these are the examples of fat soluble vitamins. They are just required for various metabolic properties. They are not providing us with energy. They are just required for various metabolic activities or metabolic reactions. उनको ये catalyze करवा रहे होते हैं. इसी तरह से the third category is of the electrolytes. Electrolytes like sodium, like potassium, like chlorine, like iodine, like calcium, like magnesium, like zinc, like iron. So these are the electrolytes. Electrolytes which are required for the various metabolic processes, especially they are involved in the nerve impulse transmission. ये एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ. इसके अलावा भी बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं जो कि इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से होते हैं. सो अमंग देम वन इज नर्व impulse transmission. Clear, dear students? So these are some nutrients which are just required for the metabolic properties. Now, dear students, हम move करेंगे आगे towards the types of nutrition. So our chapter is nutrition. How we get nutrition? हमें खुराक क्यों चाहिए? हमें ये nutrients क्यों चाहिए? So इससे मूव करने से पहले एक और चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज न्यूट्रिशन. इसको डिफाइन कर लेते हैं, विच इज द हेडिंग ऑफ दिस चैप्टर. सो न्यूट्रिएंट होपफुली क्लियर हो गया आपको. नाउ न्यूट्रिशन. सो व्हाट इज न्यूट्रिएंट? इट इज द फूड और एनी सब्सटेंस दैट प्रोवाइड्स द बॉडी with elements necessary for metabolism, while nutrition, it is the sum total of all metabolic activities which are involved in the taking in and utilization of nutrients or elements for growth, repair, and maintenance of activities required for the accomplishment of vital activities.
So the sum total of all metabolic activities or processes which are involved in taking in and utilization of elements for growth, repair, maintenance of activities, and which are also required for the accomplishment of vital activities like respiration, heart beating, like transmission of nerve impulse. All these processes, ये तमाम वो process जिसके जरिए फूड को या न्यूट्रिएंट को बॉडी के अंदर ले जाया जाता है और उसके बाद उसको इस्तेमाल किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है मुख्तलिफ तरह की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए. सम ऑफ ऑल दीज प्रोसेसेस इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन. नाउ द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन. So dear students, there are two types of nutrition. Number one is autotrophic. Nutrition. And the number two is heterotrophic nutrition. So first of all, I'm going to discuss autotrophic. So auto means self, trophic means food. So nutrition हमने पढ़ लिया कि वो तमाम प्रोसेसेस जिसके ज़रिए खुराक को एक्वायर किया जाता है, इसको इंजेस्ट किया जाता है, बॉडी के अंदर ले जाया जाता है और उसको इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ तरह की एक्टिविटीज़ के लिए. दैट इज़ न्यूट्रिशन. सो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन in which the organisms use simple inorganic substances like carbon dioxide and water. So इनऑर्गेनिक, और ये भी इनऑर्गेनिक है, सिंपल इनऑर्गेनिक है, तो इसलिए वर्ड इस्तेमाल हुआ है सिंपल इनऑर्गेनिक. इनऑर्गेनिक किसे कहते हैं? होपफुली सबका इस हवाले से कंसेप्ट क्लियर है. ऐसे तमाम कंपाउंड्स, ऐसे तमाम केमिकल कंपाउंड्स जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एट अ टाइम मौजूद ना हो उनको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक, और जिसमें कार्बन हाइड्रोजन एट अ टाइम मौजूद होंगे उनको हम कहते हैं ऑर्गेनिक. सो दीज आर वेरी सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. यहाँ पर कार्बन तो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर हाइड्रोजन है लेकिन साथ में कार्बन नहीं है. सो बोथ ऑफ दीज आर इनऑर्गेनिक. सो द ऑर्गेनिजम्स यूज सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड कन्वर्ट देम into complex organic food particles. Or this type of nutrition is called as autotrophic nutrition, and the process involved in this nutrition is the processes involved in autotrophic nutrition are, number one is photosynthesis. The major process through which the living organisms which make their energy or make their food for themselves, that is the major process, photosynthesis. So mainly by photosynthesis and sometimes chemosynthesis. बैक्टीरिया वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इस्तेमाल करके, केमिकल्स को इस्तेमाल करके अपनी वहाँ से एनर्जी को ड्राइव करते हैं. तो वहाँ पर आपने कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया पढ़े थे. तो ये वही प्रोसेस है, वो भी ऑटोट्रॉफ ही थे. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया में आपने पढ़ा था, कीमोसिंथेटिक एंड एज वेल एज द फोटोसिंथेटिक. लेकिन डियर स्टूडेंट्स याद रखेंगे, हम जब एक जनरलाइज्ड वे के में बात करेंगे, सो द मेजर प्रोसेस इन्वॉल्व इज फोटोसिंथेसिस. तो आपको याद है कि फोटोसिंथेसिस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, it's 6 molecules plus 12 molecules of water in the presence of chlorophyll and sunlight. It forms glucose plus 6
ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एंड 6 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और इसकी वजह से ये जो ग्लूकोज बनी है ये ऑर्गेनिक है, क्योंकि देखिए कार्बन और हाइड्रोजन दोनों के एट अ टाइम ये मौजूद है इस कंपाउंड के अंदर ग्लूकोज में। सो दिस इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। और डियर स्टूडेंट्स, जो ऑर्गेनिज्म इस तरीके से अपनी खुराक प्रिपेयर करते हैं, दे प्रिपेयर देयर फूड, दे आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफ्स एंड दैट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और साथ में आप ये जरूर मेंशन करेंगे द ऑर्गेनिजम्स which prepare their food by themselves are called autotrophs. They're called as autotrophs, and the type of nutrition, the method by which they get their nutrition is called as autotrophic nutrition. Now the second category, the second type of nutrition, that is अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इसमें एग्जाम्पल भी कोट कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे मूव करते हैं। सो एग्जाम्पल्स में याद रखेंगे कि ऑटोट्रॉफ कौन कौन से हैं। ऑल plants except monotropa, except monotropa, ये भी एक प्लांट है, सिवाय इसके बाकी तमाम प्लांट्स जो हैं दे आर ऑटोट्रॉफ्स। इसी तरह से एल्गी, इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स साइनोबैक्टीरिया। So these are a few examples of autotrophs or which get their food through autotrophic nutrition. Now, the second category is of heterotrophic nutrition. The second type of nutrition, so it can be defined as the type of nutrition in which the organisms are unable to synthesize food by using simple inorganic substances जो कि इस्तेमाल करते हैं ऑटोट्रॉफ्स। तो जब ये खुद से अपनी खुराक नहीं प्रिपेयर कर सकते, सो हाउ डू दे गेट द न्यूट्रिशन? They are dependent upon autotrophs for nutrition. So that type of nutrition is called as heterotrophic nutrition, and the organisms which cannot prepare their food by themselves are called heterotrophs. They're called as heterotrophs. ऑर्गेनिजम्स को हम हेटरोट्रॉफ कहेंगे और इस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को, इस तरह से खुराक हासिल करने के तरीके को या प्रोसेस को हम कहेंगे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसमें भी एग्जांपल्स कोट कर लेते हैं। सो होपफुली एग्जांपल्स आप समझ गए होंगे और आपको पता होंगी डेफिनेटली दैट
all animals, they are heterotrophs, all animals. इसी तरह से dear students, fungi, they are heterotrophs. Most bacteria, they are also heterotrophs, and like that the protozoans as well as the fungi like protists, which include slime molds and water molds, all these are the examples of the heterotrophic organisms or heterotrophs. So dear students, next अब स्टार्ट करने जा रहे हैं. जैसे कि हर चैप्टर के अंदर हमने देखा कि हम दो कैटेगरीज में चैप्टर को आमतौर पर पढ़ते हैं. मोस्टली हमने प्रीवियस चैप्टर्स में देखा कि पहले हम प्लांट के अंदर उसको डिस्कस करते हैं, उस प्रोसेस को, फिर उसके बाद एनिमल्स के अंदर. इसी तरह से न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन को भी हम पहले देखेंगे प्लांट न्यूट्रिशन, फिर उसके बाद देखेंगे एनिमल न्यूट्रिशन. प्लांट न्यूट्रिशन जो है ज़्यादातर जो है हम डिस्कस कर चुके हैं इन प्रीवियस चैप्टर्स. तो यहाँ पर सिर्फ उसका बेसिक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम देंगे. ज़्यादातर जो प्लांट्स की जो न्यूट्रिशन है यानी कि फोटोसिंथेसिस का अमल, वो हम चैप्टर नंबर 11 इससे प्रीवियस के अंदर डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं. और दूसरे नंबर पर चैप्टर नंबर 6 एज वेल हमने उसके अंदर भी इनको डिस्कस किया था, जहाँ पर मुख्तलिफ तरह की ये न्यूट्रिशन थी, लाइक इन बैक्टीरिया के हवाले से फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन एंड कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन, साइनोबैक्टीरिया, वहाँ पर भी डिस्कस कर चुके हैं एज पर द केस ऑफ द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ MCQs जो आपसे पूछे जा सकते हैं. नंबर 1, दैट इज ऑल प्लांट्स एक्सेप्ट मोनोट्रोपा. ये एक्सेप्शन की जो बात है, कौन सा ऐसा प्लांट है जो कि ऑटोट्रॉफ नहीं है. सो दिस माइट बी आस्क्ड इन द MCQs. ये आपके जनरल नॉलेज में भी होना चाहिए. इस तरह से आपसे ये पूछा जा सकता है, लाइक विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटोट्रॉफ. उसमें ऑप्शन अल्फा आपके पास हो सकती है प्लांट्स, ऑप्शन बीटा इज लेट्स सपोज एल्गी, option Charlie is cyanobacteria, and option delta, let's suppose it is protozoans. So the correct answer will be protozoans, because protozoans they are heterotrophs. इसी तरह से heterotrophic nutrition में भी पूछा जा सकता है, like which one of the following is not included in heterotrophs. So इसमें हम देखेंगे, अगर तो हमने MCQ इस तरह से बनाना है कि which one of the following is not included in heterotrophs, तो फिर हम इसी को ये स्टेटमेंट को हम रिवर्स करेंगे. लाइक इसमें ऑटोट्रॉफ्स में हम लिखेंगे एनिमल्स, फंजाई, प्रोटोजोन्स, और डी ऑप्शन में लिख देंगे प्लांट्स या एल्जी. तो इसमें प्लांट्स और एल्जी चूंकि ये हेटेरोट्रॉफ नहीं है, दीज आर द ऑटोट्रॉफ्स, तो ये इसका आंसर होगा. इसी तरह से अगर ये पूछा जाए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हेटेरोट्रॉफ, इसी को अगर हम इसी स्टेटमेंट ऑप्शन यही रखें, ये ऑल दिस ऑप्शंस रिमेन द सेम, और इसमें हम स्टेटमेंट को चेंज कर दें, लाइक विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेटेरोट्रॉफ, तो उसमें ऑप्शन अल्फा प्लांट्स, ऑप्शन बीटा इज एल्गी, ऑप्शन चार्ली वाज साइनोबैक्टीरिया, एंड ऑप्शन डेल्टा वाज प्रोटोजोन्स. तो हमारे पास यहाँ पर करेक्ट आंसर फिर वही रहेगा, लेकिन जस्ट स्टेटमेंट को हमने घुमाया. फर्स्ट स्टेटमेंट मैंने आपको बताई थी MCQ के वाले से, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटोट्रॉफ, तो तब ये आंसर क्या था, प्रोटोजोन्स. अब दूसरी ऑप्शन सेम रही, लेकिन यहाँ पर इसकी स्टेटमेंट कैसे चेंज की गई, दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेटेरोट्रॉफ. तो इन ऑप्शन सेम रही, आंसर फिर भी वही प्रोटोजोन्स ही रहेगा, क्योंकि प्रोटोजोन्स दे आर द हेटेरोट्रॉफ्स. सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि बेसिक जो टाइप्स हैं न्यूट्रिशन की, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक, उनमें डिफरेंस क्या है, न्यूट्रिएंट और न्यूट्रिशन में डिफरेंस क्या है, ये भी आपने देख लिया. ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं. होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. सो तब तक अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.